Hello everyone and welcome to my YouTube channel United Road. So guys, ये जो stream है, this stream is all about facts पे तो बात करेंगे. We are going to laugh a lot as well because ये कोई debate है नहीं. To be very honest, it's not even a debate. This is something जो Liverpool fans का है यार. They want to get into topics जहाँ पे they don't have to talk about their team's failure this season. So वही लग रहा है, but चलो, now that they have started, we are going to talk about it. We will talk about the Van Dijk versus Vidic. ये जो debate चल रहा है भाई कि who are you going to take in your team, which player you should be having in your team in the prime and all that. So सब पे बात करेंगे with facts, figures and everything. बहुत लोगों का है कि भाई Van Dijk changed Liverpool entirely, he dominated and all that. So चलो ठीक है, we will take everything into consideration today. मजा आएगा भाई, because as I said, ये comical debate है. It's not even a topic for debate. Exactly as Jan bhai said, welcome to the stream. Fabrizio bhai as well, Marlene, welcome. भाई Gavi might be a free agent. Let's see how it goes. अभी Gavi पे बात नहीं करेंगे भाई. To be very honest, take Gavi aside, कोई मतलब नहीं है उसका. Van Dijk versus Van Disney. Sorry, yeah. Van Dijk versus Vidic. So 3 round of bets, as I said. ये होना ही था भाई. चलो. मैं वही बोल रहा हूँ. Let people join as well. It's gonna be fun. It's gonna be fun. So. Don't worry. As I said, it's all about, today's stream is all about sharing your views, having some fun, because according to me, it's not a debate. ठीक है, बहुत लोग debate कर रहे हैं, बहुत लोग करते रहेंगे. For me, it's not a debate. So we will see how it goes. चलो भाई. भाई देखो, I will talk about Van Dijk first. ठीक है? I'm not gonna say that he didn't make an impact. I'm not gonna be biased. I will talk about facts. And the fact is that he definitely made an impact with Liverpool, for Liverpool, when he joined in. Before that, Liverpool was an absolute mess. ठीक है? इस पे there is absolutely no doubt, and there should be no doubt whatsoever that he definitely made a difference. He is very vital to what they have done in terms of winning the Premier League, in terms of winning the Champions League. But then, is he in the great line of Vidic, Rio, Terry? Not at all. Not at all. Exactly, भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना. At this point of time, that's what I'm saying. कि this is a, it's a, जो बोलते हैं ना, laughable attempt by what is his name, Gallagher, whatever he is, the guy who scored more own goals, so क्या बोल सकता हूँ मैं उसको. Yeah, overhyped by Liverpool fans, 100%, Jan bhai, overhyped by Liverpool fans, and we have seen that. क्या हुआ है, we have seen that. So 3 good seasons, definitely, but after that, it's been a nightmare. ठीक है? लोग बोलते हैं चलो यार इंजरी पे है and all that, but we have seen. United, देखो, at this point of time, even though, season कैसा भी जा रहा हो, बस United से बोल दो, United के player से make a comparison, and all of a sudden, it's totally different. Carragher is an attention seeker. ये तो है ही भाई. It's a fact. Liverpool fans को तो छोड़ दो यार. This guy gets paid. ठीक है? अगर fans का कोई debate हो यार, that's totally different. Fans debate on all sort of crazy topics. Ronaldo versus Messi चलता रहता है, Rooney versus कोई चलता रहता है. Everything happens. But what he is saying is an absolutely laughable thing. Why we are here to laugh.
You know, we are here to share facts, we are here to laugh. We are not here to do anything. मैंने इसलिए ये चीज डाली है. इससे ज्यादा we are going to talk about the City game later on as well. City versus Bayern Munich, Inter versus Benfica भी है. So 2 good games. Rashid situation so far nothing. Marlene, so far nothing. I think we will get an update tomorrow. About Rashford, we will get an update tomorrow when the boss will talk to the media, I think. Right now, we are not going to see any news. You know, whatever it is under the wraps. And in my opinion, I think he will definitely miss the Sevilla game. But let's see. But you know, as I said, you can definitely say he made an impact for his team. Huge money was paid for him. He came in, he made a difference. You know, you won. But then putting him in the, you know, long list of Maldini and all that, so क्या ही बोलूं, भाई it won't lag again. Long list, exact. भाई 100 छोड़ दो यार, प्रीमियर लीग की बात करो. Liverpool fans talk about Van Dijk as he is the best of all time. You know, they call him the GOAT. क्या बोलूं भाई मैं इस पे? भाई two really good seasons, definitely. 2 really good seasons, but that's it. Bas. 2 really good seasons. You know? And people always say, chalo theek hai bhai, mentality leke aaya, but it was always a team effort. It's not just about one guy. भाई इसको रैमोस, इसको माल्डीनी, इसको पता नहीं क्या क्या किससे कंपेयर कर दिया है. भाई मैं वही चीज बोल रहा हूं. You know, at this point of time, what I am just going to say is, he has made an impact. मैं ये चीज बिल्कुल बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा that he has made an impact. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि he has not, you know, been in the, जो बोल सकते हैं ना भाई, चलो ठीक है इंजरी हुई है उसका, I'm not taking that injury part away. ठीक है, I'm not taking that injury part away whatsoever. But then still you cannot compare him with the likes of Rio Ferdinand, you know, Vidic. इनसे कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सिंपल. जिसको माननी है ये बात वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है भाई वो नहीं माने. But this is a fact. Anyways, guys, आज City versus चलो आज भाई सिटी वर्सेस बायर्न भी है. वी विल कीप एन आई ऑन दैट. थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे. बायर्न डेफिनेटली, यू नो, द टीम टू वॉच आउट फॉर. सिटी चैंपियंस लीग में उनको क्या हो जाता है आई डोंट नो, बट इफ दिस सिटी टीम इज नॉट गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग तो फिर भाई कोई जीतेगा. यू नो, दे हैव एवरीथिंग कवर्ड. दे हैव एवरी वेपन इन देयर आर्सेनल. सो लेट्स सी. भाई आई वोंट गो दिस फार टू बी वेरी ऑनेस्ट. इतना ओवर एग्जैगरेट आई वोंट डू टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई अब वो खेल नहीं रहा होता एंड ऑल दैट. बट आई वुड डेफिनेटली से कि भाई बहुत, यू नो, फॉर टॉप टीम का मैं वही बोल रहा हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ टॉप टीम्स. ठीक है, उस टाइम पे चेल्सी का उठा के देख लो टॉप पेयरिंग. उस टाइम पे यूनाइटेड की टॉप पेयरिंग उठा के देख लो. उस टाइम पे आर्सेनल के सीबीज उठा के देख लो. चलो मैन सिटी तो उस टाइम पे था ही नहीं, हटा दो. ठीक है, सो 3-4 टीम्स. मैं बैलन डॉर में सेकंड आ जाना, बैलन डॉर भी जीत जाता मैं, तब भी उसको कंपैरिजन में नहीं डालता, बिल्कुल नहीं डालता.
हाँ रिफ्रेश किया था भाई, मैंने रिफ्रेश किया था. एज आई सेड इस टाइम पे आईपीएल वगैरह चल रहा था भाई. आई जस्ट मेक श्योर कि भाई मैं स्ट्रीम करता रहूं सो दैट देयर इज नॉट अ ह्यूज गैप ऑन द चैनल. बट ये फॉर मी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई आई एम जस्ट गोइंग टू लाफ टुडे. क्योंकि इस बारे में और क्या ही बोल सकते हैं. इस बारे में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है बोलने को. वेयर वी गो एंड वी आर लाइक अरे भाई इट्स इवन अ डिबेटेबल थिंग. ठीक है, जो है सो है. एज आई सेड 2 चैंपियंस लीग गेम्स टुनाइट, 2 very good Champions League games tonight. मेरे ख्याल से one will be full of attack and the second one इंटर का गेम हमने देखा है भाई. जिन्होंने भी देखा है, if you have not seen, Inter plays, Inter at times they will just play on the counter. So if Benfica can take their counter out of the game, they might enjoy a positive result. But yeah, it's easier said than done. It's gonna be a good game in my opinion. Bhai, see, for me, as I always say, for me, Ballon d'Or makes no sense. For me, Ballon d'Or is something that I never, ever think about. कि Ballon d'Or से बंदे जज होंगे. Ballon d'Or से किसी की ग्रेटनेस जज होने लगी फिर तो क्या ही बात है भाई. फिर मैं क्या ही बोलूं. प्रफुल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई आई डोंट नो कौन है 8% वीवीडी वाले, बट ठीक है, वैरायटी बनी रहनी चाहिए थोड़ी, और क्या ही बोल सकता हूं मैं. So, भाई ये वाला पोल अभी मैं रहने दूंगा. As I said, we are also going to talk about City versus, but पोल में इसको आराम से रखूंगा. भाई सिटी वर्सेस उसके प्रेडिक्शन भी आ जाएगा. बायर्न के, सिटी वर्सेस बायर्न के प्रेडिक्शन आई वुड लव टू हैव एज वेल. मेरे हिसाब से आई थिंक इट माइट बी अ ड्रॉ टुनाइट. यूनाइटेड के गेम्स पे मैं प्रेडिक्शंस नहीं देता, बट बाकी गेम्स पे आई कैन डेफिनेटली गिव द प्रेडिक्शंस. इन माय ओपिनियन इट माइट बी अ ड्रॉ. Anyway, bhai, welcome to the stream. Thanks a lot. Bhai, close to 5,000, but still long way to go. Long way to go. So let's see. City 3-2 Bayern first leg. Chalo bhai. City are the way they are playing. Tuchel क्या टीम बनाता है to be seen. Benfica 3 Inter 1. Okay. भाई अगर 3 गोल मार रही है, if this is the score line, then Benfica is going through. Second leg में मेरे हिसाब से they won't be able to come back when it comes to Inter. ये इससे वापस नहीं आ पाएंगे if that happens. So let's see how that goes. We will have to wait and watch. I'm fine. How are you? And welcome to the stream. As I said, we are going to just have a laugh today because it's a Van Disney versus Vidic debate. Also, we are talking about City versus Bayern as well as Benfica versus Inter. 2 good Champions League games, in just about 2 hours time. So, hopefully next season we will be in the reckoning. Hopefully next season we will be competing. I am not saying that we are going to win, but at least we should be in the mix next season if we have a good window. So, let's see how that goes for us as well. So, Benfica at home. This is the first leg I'm talking about. First leg, Man City is at home. So, 4 very good teams who are in action today. So, Vidic and Rio, exactly. The point that Jihan made, that in 2000s Van Dijk won't have even played. I think it's a valid point, but because when you look at the CBs, for top teams during that time, Arsenal very settled pair, Chelsea they have a very settled pair, United very settled pair, so Van Dijk, Newcastle and all, he must have been playing, but I think that's it, so let's see. Yes, predictions for the Benfica versus Inter game, predictions for the Man City versus Bayern game. And as I always say, keep liking, sharing and subscribing. So, क्योंकि भाई IPL season चल रहा है, so when IPL is on at this point of time, I don't expect many people to show up. मेरी majority of the audience जो है वो Indian है भाई, so I don't expect them to turn up when it's IPL time. So
Hopefully जो भी आ रहा है, thanks a lot for joining in. All right, we have a Spurs fan in the house. He's not looking very happy. Both match 0-0. City Bayern 1-1. Okay. I am expecting a draw in City Bayern as well. 1-1, 0-0, 2-2, I don't know. But I am expecting Jahan Bhai predicted a win. Jahan Bhai predicted a win for City. So, let's see. Both match 0-0 potato boy, I don't think so. I don't think so. But let's see. Let's see. It's football. Nothing can be 100% sure. But in my opinion, 0-0 is a bit over-exaggerated. दोनों games में एक game शायद हो जाए because we have seen Inter, they play a lot of draws. ठीक है? They play a lot of draws. We have seen that, but दोनों games draw 0-0. You know, it's looking very unlikely. Very unlikely. But chalo, we have seen crazy results in football, so you never say, never say never वाला scene at this point of time. All right, predictions आते रहना चाहिए भाई. जो भी आया है, thanks a lot for joining in, which I always say. जो भी share कर सकता है कर दो, जो भी नहीं, and please make sure that you are in the comment section and you are always sharing your thoughts, which is very, very important. भाई मेरे हिसाब से you guys might try for Potter. As I just have a feeling either Leicester or Spurs. You guys will end with, Potter. Just my feeling. मैं किसी चीज को श्योर नहीं बोल रहा हूं, but in my opinion, what I feel is Spurs might end up with Potter or Leicester might end up with Potter. इन दोनों में से मुझे लग रहा है जैसा. मैं ठीक हूँ संकेत भाई, हाउ आर यू? शिवम भाई says 1-0 or 1-1. लेस्टर तो भाई हाँ वही है. लेस्टर ने अभी इसको डाला है ना, क्या बोलते हैं यार, स्मिथ, जो पहले एस्टन विला वाला मैनेजर था. Spurs should hire a manager. It's difficult with Levy. Fair enough, Praful bhai. Bhai, see, Spurs के लिए Pochettino will be a legend, Hari bhai. That goes without saying. He is a legend. You cannot deny that. For them, he is an absolute legend. Whatever he did, very unfortunate the way he had to go. But Pochettino, they will take any day. Because when you look at the names that's available, कोई Pochettino के कैलिबर है नहीं, उसके ऊपर के कैलिबर वाला कोई बंदा जाएगा नहीं Spurs. Enrique, Nagelsmann, I don't think they are going to go to Spurs. So, Poch Madrid जाएगा, chances हैं. I won't deny that. Son gets all Czechwizzy is perfect. भाई Czechwizzy के लिए you will have to shell out a lot of money. Son से तुम्हें अगर Son को तुम बेचते भी हो, you are not going to get a lot of money, but for Czechwizzy you will have to spend a lot of money. तो देखने वाली बात है. He was a totally different thing. When you look at the names like and all that, तो ये Spurs का golden era बोल दो, Spurs का golden period बोल दो यार. That's what you can say. उसके बाद कुछ हुआ नहीं.
And Ankit bhaiya, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. Ankit bhaiya, predictions for Bayern versus City. Predictions for Bayern versus City. What do you think, Ankit bhaiya? चलो भाई देखते हैं. Who wants Spurs a trophy? मैं वही बोल रहा हूँ भाई. You know, that's what I am saying as well. When you look at certain players, you know, when you look at certain players, बहुत मुश्किल है. स्पर्स को यार टॉप क्लास प्लेयर्स लाना at this point of time, it's very difficult. बहुत difficult है. One zero. Okay. Second draw आज. Score draw and Bayern going through gut feel. चलो देखते हैं भैया. मेरे हिसाब से आज ड्रॉ मैं भी मेरे को भी लग रहा है. I am also thinking कि आज ड्रॉ है. City will go to finals to lose again. भाई अगर City इस बार फाइनल जाती है, there is no one who can, you know, make City lose the game. I don't think so. मैं वही बोलता हूँ भैया, there are certain teams, you know, like Chelsea हो गया, United हो गया, Barca हो गया. These are the teams I will never count off. You know, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि these guys won't win. I think when it comes to Champions League हम बिल्कुल different DNA से खेलते हैं. You know, we take that competition in a totally different way. So let's see how it goes. Rajkishore bhai, welcome to the stream. City is gonna lose again. Okay. As I said, when we look at Champions League, you know, मैं किसी भी time पे, you know, the way City are built this season, it's gonna be very difficult, you know, to beat them. But you know, we have seen Bayern Munich in Champions League, they show up, they turn up. So I still think Spurs will get top 4. भाई मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है. It needs a massive जो बोलते हैं ना fuck up from United as well as Chelsea. As well as Newcastle. You know, तभी होगा. Will be a draw. भाई अगर Bayern, if with Bayern he is you know, going with a defensive tactic, I think City will tear them apart. You cannot go defensive, Gokul bhai, to be very honest. Hopefully tonight it's in 2 hours. City versus Bayern is in 2 hours. भाई ये if but वाली बहुत सारी चीजें हैं. You might even beat us and then you will end up losing point against someone else. You know? So you never know. At this point of time, the way league is going on, you never know. नहीं भाई, not doing the watch along. कल ऑफिस जाना है भाई. I have office in the morning. अरे कोई बात नहीं भाई. You can always watch the game later. I think it's going to be a good game. That's what I feel. You know, at times we expect कि भाई game is going to be very you know, full जो बोलते हैं ना, full on attack mode, जहाँ पे दो टीमें बहुत तगड़ी हों with full of attacking weapons, and then we are like, you know, they are like अरे भाई आज का game हारो मत. You know, we have seen that with City and Liverpool as well at times. So let's see how it goes. I'm 12 man times right now. भाई नहीं, कल तो अभी ऑफिस जाना है भाई, इस वजह से कल ट्राई कर सकता हूँ. मैड्रिड वर्सेस चेल्सी आई कैन ट्राई, अगर मुझे थर्सडे जाना नहीं पड़ा तो, क्योंकि फिर थर्सडे को भाई यूनाइटेड का गेम है और फिर फ्राइडे ऑफिस है, तो फिर मुश्किल है थोड़ा.
My current top 7 is Man City, Arsenal, United, Spurs, Brighton, Aston Villa, Liverpool. भाई न्यूकासल का है, न्यूकासल टॉप 7 में भी नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। भाई ऑफिस का ऐसा कुछ मेरा टाइम नहीं है, मैं निकलूंगा रोज अराउंड 10:30-11 बजे के अराउंड। यूएल भाई देखो वेस्ट हैम वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है, एज आई सेड नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग इन माय ओपिनियन, जो 2 टॉप की टीम है वो तो ऑब्वियसली खेल ही रही है, वी आर इन द मिक्स, न्यूकासल इन द मिक्स, एंड मेरे हिसाब से स्पर्स इन द मिक्स एज वेल। I am not counting Spurs out just yet. भाई 8 CGPA थी मेरी, I got 8 CGPA. पांच नहीं मिलेंगे भाई। ऋषभ भाई आई एम फाइन, हाउ आर यू? 5 स्लॉट कहां से दे दोगे? बीच में तो 4 को हटा के 3 करने की बात चल रही थी। इफ यू लुक एट द लास्ट नंबर, यू नो अभी लिवरपूल और चेल्सी इधर लास्ट कुछ सालों में जीती, आफ्टर यूनाइटेड वो आफ्टर चेल्सी व्हेन दे वन, उसके बाद देख लो कितना लंबा ड्राउट था, यू नो लुक एट द number of years that no Premier League team won anything. फ्रांस में भाई 3 है, बट हाँ फ्रांस का 1 ले सकते हो। नॉट येट हरी भाई, नॉट येट भाई, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। ट्रांसफर लिस्ट में भाई ओनर्स के ऊपर है यार ऋषभ भाई, ओनर्स होंगे तब तो ट्रांसफर लिस्ट होगी, अभी तो ओनर्स का ही नहीं पता। राइट नाउ वी हैव नो आइडिया अबाउट द ओनर्स, हाउ कैन वी गो आउट एंड टॉक अबाउट कि भाई ट्रांसफर लिस्ट में क्या कर सकते हैं, यू नो अगर नया ओनर नहीं आया तो भाई ट्रांसफर लिस्ट ज्यादा कुछ होना नहीं है, इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट, जो बोलते हैं ना बेकार सा ट्रांसफर विंडो। भाई he is a good player भाई, you know मैंने इसको खेलते हुए देखा है, I have seen few of his games, he looks good to me, but वही है हम किस, you know whether we are looking at him as a starter या हम उसको as a backup लाके उसको हम बनाना चाह रहे हैं, अच्छा that's to be seen। भाई देखो जज करने वाले करेंगे ही, you cannot do anything about that, this I won't obviously reveal यहाँ पे। भाई obviously as United fans we want Bayern to win, ठीक है, as United fans we want Bayern to win, but I expect City to win this game or even a draw, you know मैंने draw का prediction किया है, but I won't be surprised if City gets the win। Exactly है, मेडिकल हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, these are the fields you definitely, you know when it comes to grades, वहां पे तो भाई बहुत हाई चाहिए उतने की तो मेरी औकात ही नहीं थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सब। सो भाई ये पैसे फेंक तो रहे हैं, बट पैसे लेना भी तो चाहिए ना, दे आर ट्राइंग टू स्पेंड मनी, you know but they are not trying to spend unrealistic money, अनरियलिस्टिकली वो नहीं फेंक रहे पैसा। चलो भाई देखते हैं भाई, माय होम टाउन इज नॉट दिल्ली, आई एम फ्रॉम बिहार बट आई स्टे इन दिल्ली। बायर्न माइट नॉकआउट कफू भाई, चलो देखना पड़ेगा भाई, एज आई सेड आई एक्सपेक्ट अ वेरी गुड गेम, ठीक है।
भाई I took commerce. मैंने कॉमर्स लिया था भाई, पता नहीं था साइंस. माय पेरेंट्स वांटेड टू टेक मी साइंस बट मेरे बस का नहीं था. हाजीपुर भाई, हाजीपुर पास ही में हूँ, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है. चलो गाइस, फाइनल प्रेडिक्शंस एज आई सेड, मेरे को ये भाई रखना था मुझे यार वैन डाइक, और देखो जो जहां पे क्रेडिट है मैं वहां पे दूंगा. आई विल गिव वैन डाइक द क्रेडिट टू डेफिनेटली पुट लिवरपूल बैक टू विनिंग ट्रॉफीज. I am getting back to this Van Dijk versus Vidic saga because ये कोई, in my opinion, it's not even a saga. ये लिवरपूल पंडित का बोल दो, अभी लिवरपूल फैंस का बनाया हुआ है, because no one was even thinking about them. बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई. ब्रेक्सम इज गेटिंग ऑल, ओनर है ना भाई, ओनर है उस तरीके का भाई. I don't think there is a north-south divide. Always a few section, always a small population जो हमेशा उनको हर चीज में डिवाइड दिखता है. They will always try to create a divide for anything. उनको खाने से लेके सोने, उनको हर चीज में डिवीजन ही दिखता है. So that division will never go away. But हाँ, there are certain aspects which obviously sports can always take away. भाई सुमन भाई देखो, इंजरी प्रोन नहीं बोलूंगा, आई वोंट से इंजरी प्रोन, बट हाँ इंजरी इश्यूज रहे हैं उसके इंजरी इश्यूज रहे हैं भाई. लॉरीज के लिए टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू स्पेंड उसके रिप्लेसमेंट के लिए. इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर, और किसी चीज पे नहीं. ये पूरा उसी चीज पे डिपेंड करता है कि हाउ मच मनी यू वांट टू स्पेंड टू गेट अ बैकअप. लॉरीज तो भाई, लॉरीज वाज नेवर अ ग्रेट कीपर. जस्ट बिकॉज ही वन द वर्ल्ड कप इसका मतलब वो ग्रेट कीपर थोड़ी हो गया. ही वाज ऑलवेज अ गुड कीपर. तुम्हारे लिए वो खेलता गया, बट ओवरऑल ही वाज नेवर अ ग्रेट कीपर. Dean Henderson, right? And as I said, how much they are willing to spend on a keeper totally depends. उस पर डिपेंड करता है. लिवाकोविच और राया के लिए you guys will have to spend 40 भाई, 40 मिलियन. एक साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट, एक साल का भी नहीं रहता उसका कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगले साल वो फ्री हो जाएगा, तो इस सीजन उसका है, मतलब ही इज गोइंग इनटू हिज लास्ट सीजन. 40 मिलियन दे के कोई लेना चाहता है या नहीं, दैट्स टू बी सीन. That's totally to be seen. So, चलो भाई, the game is gonna start in 2 hours. अभी तो बहुत टाइम है, बट यही बोलना था मुझे, that my final point is when a pandit, चलो ठीक है, who's getting paid so much money to put up his views, should not talk so much rubbish. It's one thing that you have your bias for someone, but then when you look at the way you are spreading that bias, it turns to a point where it's nonsense. अब मैं कल बैठ के बोल दूं कि भाई just because Berbatov played for United, he is the greatest striker of all time, it makes no sense. कोई लॉजिक नहीं है इस बात का. And that they need to understand as well. Van Dijk, he made a good impression, he made a good impact for Liverpool, but that was it. In my opinion, that was it. That's his, he can definitely be called as one of the good defenders in the Premier League, but he's not. And I'm not just talking about United defenders. There are other Chelsea defenders are there, Arsenal defenders are there, who makes the list way above Van Dijk. That's what I want to say. So,
this, I will end the stream here. Thanks a lot for joining in. Thanks for giving the time. And I wish you guys for the game on Thursday. Stay safe and have a good night.